So today we are going to learn methods of the object class. Find new Java project. Okay, object class methods. Class method. So right click here, new, create a class. Okay, right click here, new, create a class. Suppose my class is, take example, customer. Class is customer. Integer, private, integer, customer ID. Private string customer name, private double, or you can say integer customer age. Okay, so I have three attributes here. Right click, source, generator, constructor. Select all, click OK. तो ये आ गया तुम्हारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे, ठीक है. This is the constructor for which class? Customer class. Now, to print this detail of customer, okay, we have to create, go to source, generate getters and setters. Generate getters and setters. Select all, click OK. Now, this class is created. This class is here created. This is our customer class. Right click, new, create another class. Customer main. Customer main. In customer main, here create an object of customer class. Create an object of which class? Customer class. Customer is equal to new customer. New customer. Then pass the customer ID, customer name, Ramesh, customer age 25. ठीक है, तो ये हो गया पहला कस्टमर. अगर डेटा को प्रिंट करना है तो यू कैन कोड कैसे लिखते हम लोग. इफ यू वांट टू प्रिंट द डेटा, कस्टमर आईडी, customer ID, okay, plus customer dot get customer ID. उसके बाद इसका इसको customer name plus customer dot get customer name. इसके बाद आएगा customer ID name, age, customer dot get customer age. तो ID, customer का name और age. तो ये हो गया प्रिंट डेटा. राइट क्लिक, रन एज, प्रिंट करो इसको. ओके, नाउ instead of using this code, if I print only customer, right click and application. See,
we are like getting over here customer name and some code. Here we have customer name and some code. This is called a hash code. So this is called a customer class name and hash code. So if you try to print any object, you will get the class name with hash code. But I want this detail by calling the object. Means if I print the object, I want this detail. So okay, what should I do for this? Okay, go to customer class, and here public string to string, public string to string, return, listen carefully, public string to string, return customer ID plus get customer ID plus slash n customer name plus get customer name plus slash n customer age, get customer age. तो ये आएगा कस्टमर का डेटा by like printing the object. अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया तो you will get that toString method automatically. ये देखो अब ये toString को कॉल किया इसने, क्या कॉल किया इसने? toString. तो इसका मतलब what is the use of toString method? toString method is used to print the object in the form of string. toString method is used to print the object in the form of string. But ये toString method आया कहाँ से? This toString method is coming from the base class which is called as the object class. सारे classes का एक class होता है parent class, उसको बोलते हैं object class. Okay, क्या बोलते हैं? Object class. From this object class, okay, we are like calling this method. Which method? toString method. Okay, this from the object class. From this object class we have this method toString method. So इसको बोलते हैं हम लोग overriding. क्या बोलते हैं इसको? overriding. This is called as overriding. If a method is coming from the base class with same signature, it's called as the overriding. ठीक है? overriding, remember this. तो इसको और एक तरीका है इसको लेने के लिए. अगर तुम्हें ऐसे नहीं चाहिए ना, इसको कमेंट कर दो, put this code in the comment, और यहाँ पे लिखो राइट क्लिक source, okay, override implement method. Which method I want? toString. ये देखो ऐसे भी आएगा. Look at this override. This is called as annotation. इसको बोलते हैं annotation. इसका मतलब कि ये जो मेथड है ये parent class से आ रहा है. This method is coming from the parent class. Now you can add your code here. जो भी तुम्हें प्रिंट करना है इसके अंदर, that you can put here. ऐसे लिखो यहाँ पे. Okay. Everybody understood the use of toString method? Please reply. मतलब अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है तो यू कैन यूज toString मेथड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, रिमेंबर दिस. ओके, नेक्स्ट इज, अभी इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट कस्टमर 1, सपोज अगर मेरे पास और एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे, ठीक है. अभी मुझे बताओ ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है या डिफरेंट है? व्हाट डू यू थिंक? बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर सेम और डिफरेंट? ओके, दैट्स राइट. कि यहाँ पे दिस इज योर मेमोरी. ओके, देन यू आर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हियर, दिस इज सेकंड ऑब्जेक्ट हियर, customer 1, customer 2.
कस्टमर 1 यहाँ पे पॉइंट कर रहा है इसको, एंड कस्टमर 2 इज पॉइंटिंग टू दिस मेमोरी। ठीक है, इनके अंदर डेटा सेम है। व्हाट इज द डेटा हियर? 101 रमेश, 101 रमेश and age, same data 101 ramesh and age, but data is same but the memory is different। डेटा दोनों में सेम है बट मेमोरी क्या है दोनों का डिफरेंट है, याद रखो। ओके, सो डेटा इज सेम। अगर तुमने यहाँ पे चेक किया कोड को, सपोज इफ कस्टमर 1 डॉट इक्वल्स कस्टमर 2, ये इक्वल्स ये प्री डिफाइंड मेथड है। ओके, सेम ऑब्जेक्ट else different object, सेम ऑब्जेक्ट और डिफरेंट ऑब्जेक्ट। चेक करो क्या आएगा, क्या आ गया? डिफरेंट ऑब्जेक्ट, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इक्वल्स मेथड विल चेक द मेमोरी हियर। सिमिलरली using double equal to, same code, यहाँ पे आएगा कस्टमर इक्वल टू कस्टमर 2। अभी देखते क्या आता है। Okay, using double equal to different object means either you can use this symbol or you can use equals method. Answer is different object because in both the scenario compiler will check the memory address. The memory is different but contents are same. Memory is different but contents are same. But right now equals method and double equal to operator checks the memory. Everybody understood this? Please reply. By default equals method and this double equal to checks the memory. Any questions here? Please reply. Any question here related to the equals and related to the double equal to? Any questions here? Yes, that is what we are going to do now. Okay, so right now remember by default equals method and double two checks the memory, but I want to check the data. I have to check the data. So then what I'm doing? Go to customer class, right click, source, override the method here, equals method. ये देखो, so I have equals method here. Listen, अभी तक ये method नहीं था. Now I have override the method equals method. इसके अंदर ये parent है object, तो ये parent तो सबके लिए होता है, हाँ याद रखो। अभी क्या होगा? Now I can check here this dot get customer ID equal to but obj ये तो parent है, parent के थ्रू I cannot call the child का मैच डेटा। तो एक काम करो, कस्टमर C is equal to, तो बोलते डाउन कास्टिंग। क्या बोलते? डाउन कास्टिंग। डाउन कास्टिंग मतलब क्या? पेरेंट के ऑब्जेक्ट को तुमने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। पेरेंट के ऑब्जेक्ट को तुमने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। ये कब पॉसिबल है? अगर पेरेंट के अंदर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है तो। अगर पेरेंट के अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है तो ही ये पॉसिबल है।
अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कस्टमर का जो ऑब्जेक्ट मैंने भेजा, मतलब इस सिनारियो में कस्टमर 1 इज दिस एंड कस्टमर 2 इज अ पैरामीटर, कस्टमर 2 इज अ पैरामीटर, तो दिस इज अ कस्टमर 2। कस्टमर 2 को कन्वर्ट किया कस्टमर के अंदर, कस्टमर 2 कन्वर्ट इनसाइड अ कस्टमर, you will get here. So this C means customer 2. So this customer 1 customer ID is equal to C dot get customer ID. Okay, listen, this dot customer ID मतलब कौन, पहला कस्टमर, और obj मतलब कौन, सेकेंड कस्टमर। अगर दोनों का आईडी सेम है तो आई विल रिटर्न ट्रू। एक ही वैल्यू चेक कर रहा हूँ फिलहाल में, राइट नाउ आई एम जस्ट टेकिंग ओनली वन वैल्यू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। जर दोघांचा कस्टमर आयडी सेम असेल तर मी रिटर्न ट्रू केलं, आणि नसेल तर काय केलं, फॉल्स केलं। लक्षात ठेवा। राइट क्लिक, सेव दिस कोड, रन दिस प्रोग्राम, कस्टमर आईडी सेम, राइट। अभी तक डिफरेंट आउटपुट आ रहा था, अभी देखो क्या होता है। देखो सेम ऑब्जेक्ट, अगर इक्वल से देखोगे तो सेम ऑब्जेक्ट आ रहा है, डबल इक्वल टू से देखोगे तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट आ रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, कैन यू टेल मी। इक्वल्स ओव्हरराइड केलं तर डेटा चेक करतो, नाहीतर बाय डिफॉल्ट मेमरी चेक करतो। अँड डबल इक्वल टू बाय डिफॉल्ट और म्हणजे डबल इक्वल टू ऑलवेज चेक द मेमरी, double equal to always check the memory. But suppose you want to check the content of the two objects, if you want to check the contents of the two objects, then you have to override the method. Which method? Equals method. And in equals method, when you pass customer 1 equals customer 2, customer 1 equals customer 2, so then what happen, you know? So here this is customer 1, this means current object, and this is customer 2. So customer 1 object ID is equal to customer 2 object. If the ID is same for both the object, then return 2. If ID is same for both the object, then return 2. But this is possible, okay, when if you like override the equals method. If you override the equals method, remember this. If customer 1 and customer 2, okay, are same or not based on the content, for that you need to override the equals method. And whatever the condition you have mentioned in the equals method, based on that you will get equality. Based on that you will get the equality. Remember this. But double equal to always check the references. Double equal to always check the references. Okay, remember this. So if you want to check the equality of two objects, you need to override the equals method. You have to override the equals method. Understood everyone? Please reply. Okay. If you want to check the equality of the two objects, you have to override the equals method. नहीं तो बाय डिफॉल्ट मेमोरी चेक करेगा, याद रखो। अगर तुमने बोला सर मुझे आईडी के साथ नेम भी चेक करना है, तो यहाँ पे हम लोग एंड यूज करेंगे, दिस डॉट गेट नेम भी यूज करना है तो इक्वल टू गेट नेम। ओके, तो दोनों का आईडी नेम सेम है तो रिटर्न टू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, रिटर्न टू अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अगर आईडी और नेम सेम है तो रिटर्न टू आएगा, नहीं तो रिटर्न फॉल्स आएगा। हाँ, रिमेंबर दिस। तो काही क्वेश्चन असेल तर विचारा। एनी क्वेश्चन्स हियर? ठीक है। So this is called as equals method. Equals method is used to check the equality of two objects. Okay. Now next is suppose if I create customer 3 is equal to customer 2. Now can you tell me what is the difference in like मतलब अभी customer 3 और customer 2 दोनों में क्या डिफरेंस है? एक ही ऑब्जेक्ट है या डिफरेंट ऑब्जेक्ट है? टेल मी। कस्टमर 2 and 3 are the same objects or different objects? Same or different?
Okay, customer 3 is a reference variable. No, same object, Komalika. Objects are same. So here, customer 3 will point to same memory of customer 2. Remember, customer 3 will point to the same memory of customer 2. Okay, ये हो गया कौन सा वाला यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल. अगर तुमने अभी यहाँ पे चेक किया कस्टमर 3 इक्वल टू कस्टमर 2, इसका आंसर क्या आएगा बताओ. कस्टमर 3 इक्वल टू कस्टमर 2, इसका आंसर क्या आएगा? टेल मी. यस, दैट्स राइट. आउटपुट आएगा सेम ऑब्जेक्ट. सेम ऑब्जेक्ट. प्लीज नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक एवरीबडी. ये देखो सेम ऑब्जेक्ट. कस्टमर 3 and 2 both are pointing to same memory. तो यहाँ पे आंसर आएगा सेम ऑब्जेक्ट. रिमेम्बर दिस. ओके, तो यहाँ तक तो हम लोग आ गए. तो कहना कर्ल का इक्वल्स मेथड का यूज. प्लीज रिप्लाई एवरीबडी. Fine, let's go to the next method. So this memory is created here. Suppose in future, if you don't want this memory now, if you're done with your job and you don't want this memory, take an example. Customer 1 is equal to null. Customer 1 is equal to null. Customer 2 is equal to null. Customer 3 is equal to null. Okay. तो इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, एक काम करते हैं फिलहाल. राइट नाउ कस्टमर 1 और कस्टमर 2 को ही नल करते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि ये जो मेमोरी है ये अभी मुझे नहीं चाहिए. ये भी यहाँ पे पॉइंट नहीं करेगा. तो अभी इस मेमोरी का क्या यूज? लुक एट दिस. अभी ये जो ब्लॉक है ना तुम्हारे सामने, लिसन, ये जो ब्लॉक दिख रहा है ना तुम्हें. ओके, अभी इसको कोई भी नहीं पॉइंट कर रहा है. ये तो पॉइंट नहीं कर रहा है क्योंकि इसको नल लिख दिया. नल लिख दिया मीन्स व्हाट? इधर इज नो, मतलब इसको मेमोरी नहीं है, नल है अभी. सो राइट नाउ दिस इज अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट. इस टाइप के ऑब्जेक्ट को क्या बोलोगे? अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट. मतलब जिसको कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है. अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट जिसको कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है. क्लियर? बट अगर तुम लोगों ने ये डायग्राम देखा, यहाँ पे कस्टमर 2 ने तो नल बोल दिया बट कस्टमर 3 तो पॉइंट कर रहा है. इसका मतलब ये अनरेफरेंस है क्या? टेल मी. कैन आई से दिस ऑब्जेक्ट इज अनरेफरेंस? ये सेकेंड वाला सेकेंड ऑब्जेक्ट इज अनरेफरेंस. यस और नो? ओके, so there is a no reference for the this object right now. इसके लिए कस्टमर 1 के लिए तो रेफरेंस नहीं है बट कस्टमर 2 के लिए एक रेफरेंस है. ठीक है, इसको ये पॉइंट कर रहा है. तो अभी मुझे क्या करना है? आई डोंट वांट दिस डेटा. ये जो डेटा है ना ये डिलीट करना है मुझे ऑब्जेक्ट्स. तो हमारे पास एक मेथड है यहाँ पे. गो टू कस्टमर क्लास एंड हियर राइट क्लिक सोर्स and override a method which is called as finalized. Look at the method finalize. तो ये finalize क्या करता है? देखो, मुझे भी एक बात बताओ. सिंपल घर का एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुम्हें मैं. ओके, तुम तुम्हारे सपोज घर से बाहर जा रहे हो, लॉक कर रहे हो घर को. ठीक है, एंड यू आर गोइंग आउटसाइड. ठीक है, तो जब हम घर से बाहर जाते हैं तब तुम लोग क्या करोगे कि घर में अगर कुछ फैन चालू है, टीवी चालू है वगैरह, राइट? ठीक है, एग्जांपल अगर फैन चल रहा है हॉल में, सो देन यू विल स्विच ऑफ दैट, राइट? यस और नो? ओके, तो इसको देखो, पहला क्वेश्चन ठीक से समझ लो मैं क्या पूछ रहा हूँ कि तुम लोग फैन को बंद कब करोगे? टेल मी. कि अगर उसको कोई यूज नहीं कर रहा है ना, इफ nobody is using that resources then only you will switch off the fan. Am I right? If nobody is using that resources so then you will switch off the fan. Similarly, okay, तो वैसे रियल टाइम में भी प्रोग्रामिंग में भी होता है कि अभी इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है तुम्हें, कौन सा वाला?
ये वाला ऑब्जेक्ट। ओके, इस ऑब्जेक्ट को अभी कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू क्लोज सम फाइल और डेटाबेस डेटाबेस कनेक्शन और एक्सेट्रा। सो आई वॉन्ट टू क्लोज दिस। ठीक है, अगर कोई इस फाइल को इस ऑब्जेक्ट को अगर एक्सेस नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या करना है कि जैसे देखो मैं क्या करने वाला हूं कि टेक एग्जांपल, वी आर गोइंग टू डिलीट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेमोरी। ये जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारे सामने, इसको हम लोग डिलीट करने वाले हैं अभी। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करने वाले, डिलीट करने वाले। बट बिफोर यू डिलीट द डेटा, कि तुम्हें अगर कुछ कनेक्शन क्लोज करना है, पहला पॉइंट तो क्या है, कोई इसको यूज नहीं कर रहा हो इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। लिसन, nobody using this data, nobody is using this data। ठीक है, nobody is using this डेटा, तो इसको डिलीट करना है हमें। तो इसको डिलीट कौन करता है, उसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है यहाँ पे जावा के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गार्बेज कलेक्शन। Okay, garbage collection, remember this. So garbage collection is used to release the data or delete the data which is not required, but जब garbage collection आता है तब हमें क्या करना है, अगर कुछ डेटा क्लोज करना है, कुछ फाइल क्लोज करना है, मतलब इसको अभी कोई नहीं यूज करने वाला है इस डेटा को, nobody is going to use this data। बट मुझे एक बार क्या करना है कि अगर कुछ कनेक्शन क्लोज करना है, उसके अंदर कुछ कनेक्शन ओपन है या कोई फाइल क्लोज करना है, सो आई विल पुट सच टाइप ऑफ कोड इन विच मेथड, फाइनलाइज मेथड। देखो SYSO, ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बिफोर गार्बेज कलेक्शन, जस्ट बिफोर गार्बेज कलेक्शन। ओके, अभी देखो और एक बार तुम्हें अनदर, आई टेल यू अनदर एग्जांपल का। ठीक है, कि तुम्हारे घर में अगर कुछ, देखो हम लोग बोलते हैं ना कि स्क्रैप की कुछ चीजें पड़ी हुई है, या चलो कोई बुक्स है, ओके, नोटबुक है, या जो भी कुछ डेटा है, ओके, तो तुम लोग क्या बोलते हो, एक बार घर से अगर तुम्हें ये स्क्रैप का डेटा अगर निकालना है, तो तुम फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हो कि ये किसी को कोई इसको यूज कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह, है ना। ओके, बिफोर यू आर लाइक रिमूविंग दैट डेटा फ्रॉम योर हाउस, एक बार तुम कंफर्म कर लोगे कि इसको कोई यूज कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, यस और नो। ओके, तो वैसे ही होता है कि मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहा हूं, अगर मैं डिलीट कर रहा हूं, उसका जो प्रोसेस है ऑब्जेक्ट डिलीशन का, उस प्रोसेस में अगर मुझे एक बार कंफर्म करना है, कोई फाइल क्लोज करना है, कुछ ऐसा कोड है कि जो जस्ट कोई डेटा को मैं जस्ट आई एम गोइंग टू थ्रो दैट डेटा नाउ, बट बिफोर दैट I want to check some the resources has been closed or not, like the file connections or database connections. So I will put such a type of code in a finalize method. Finalize method को मैं नहीं कॉल करूंगा. We are not going to call the finalize method. Finalize method is called by the JVM, called by the garbage collection and object when the garbage collection determines. देखो यहाँ पे लिखा है that there are no more references to the object. Read this line. Called by the garbage collector an object when the garbage collection determines that there are no more references, मतलब इसके लिए कोई भी नहीं है, इस ऑब्जेक्ट के लिए कोई रेफरेंस नहीं है। So now you can delete this object from the memory। इसको तो मेमोरी से डिलीट कर सकते हो। इसको कौन डिलीट करेगा, इसको जो डिलीट करेगा वो होता है गार्बेज कलेक्शन। कौन डिलीट करेगा, गार्बेज कलेक्शन, रिमेंबर दिस। इसको डिलीट कौन करेगा, गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, तो गार्बेज कलेक्शन को कॉल हम लोग करेंगे क्या, नहीं, गार्बेज कलेक्शन को जेवीएम कॉल करता है। चलो देखते हैं यहाँ पे आता है क्या कुछ। 1 सेकेंड, थैंक यू। मतलब मुझे चेक करना है कि ये लाइन प्रिंट होता है कि नहीं। कौन सा वाला लाइन, ये जस्ट बिफोर गार्बेज कलेक्शन। नहीं आया ये लाइन, तुम बोलोगे सर आपने कॉल नहीं किया, बट हम तो कॉल नहीं करेंगे, हम ऐसे कॉल नहीं करेंगे। हाँ, प्लीज रिमेंबर दिस, कस्टमर डॉट फाइनलाइज ये अलाउड नहीं है। कस्टमर 1 डॉट फाइनल ये हम नहीं लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग, ये पॉसिबल ही नहीं, हम लोग इसको कॉल नहीं करेंगे, याद रखो। ठीक है, so you should not call the garbage collection, तो garbage collection, sorry, you should not call the finalize method।
फाइनलाइज मेथड को कॉल कौन करता है? गार्बेज कलेक्शन करता है। कब करता है? अगर कोई रेफरेंस नहीं है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, बट उसका भी एक अलग एल्गोरिदम है। बट फिलहाल हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हियर आई विल कॉल वन लाइन सिस्टम डॉट जीसी। देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, सिस्टम डॉट जीसी। इसका मतलब होता है सिस्टम डॉट जीसी। जीसी का मतलब है गार्बेज कलेक्शन। ओके, देखो अभी इसको रन करता हूं मैं एक बार। यहाँ पे क्या आ गया? जस्ट बिफोर गार्बेज कलेक्शन, एक ही बार आ गया, बट एक बार ही आया। बट मेरे पास तो दो ऑब्जेक्ट थे, दूसरा ऑब्जेक्ट क्यों नहीं रिमूव हुआ? बिकॉज दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए ये तीसरा रेफरेंस है। क्लियर? दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए ये यहाँ पे एक रेफरेंस है अभी भी, तो ये उसको यूज कर रहा है ना। तो अगर तुमने ऐसे लिखा यहाँ पे कस्टमर जी इज इक्वल टू नल, तो देखो अभी क्या होगा। नाउ बाई कॉलिंग दिस लाइन, बाई कॉलिंग दिस गार्बेज कलेक्शन, ये देखो ये फाइनलाइज मेथड कॉल हो गया दो बार, बिकॉज वी हैव अ two objects. So basically the concept is, what is a finalize method? Finalize method is used, okay, is used to close the some data or connection or the code which you want to execute just before the garbage collection is going to remove the object. अगर गार्बेज कलेक्शन को किसी डेटा को ऑब्जेक्ट को रिमूव करने वाला है, उसके पहले अगर कोई कोड एग्जीक्यूट करना है, तो यू कैन पुट दैट कोड इन फाइनलाइज मेथड। अगर गार्बेज कलेक्शन किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करेगा, उसके पहले अगर कोई कोड एग्जीक्यूट करना है, तो उसको हम लोग फाइनलाइज मेथड के अंदर लिखते हैं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? प्लीज रिप्लाई। system.gc we are calling to call the garbage collection. Okay, call the garbage collection. क्या कॉल करेगा ये? गार्बेज कलेक्शन। ओके, रिमेंबर दिस। ये लाइन किसको कॉल करेगा? गार्बेज कलेक्शन को। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है ब्रूनल? गार्बेज कलेक्शन का मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है मेमोरी में से, तो यू कैन कॉल द गार्बेज कलेक्शन। यू कैन कॉल द गार्बेज कलेक्शन। ओके, यस यू आर राइट रूपेश। अगर हम लोगों ने कॉल नहीं किया तो इट विल कॉल ऑटोमेटिकली। उसका एक अलग एल्गोरिदम है। देयर इज अ डिफरेंट एल्गोरिदम फॉर दैट। देयर आर सम स्टेप्स, ओके, फॉर दैट एल्गोरिदम। ओके, तो थ्रेडिंग का टॉपिक हो, थ्रेडिंग इन अ थ्रेडिंग। ओके, तो इन थ्रेडिंग के अंदर एक थ्रेड है। अभी थ्रेड क्या है ये बाकी लोगों को मालूम नहीं है, सो दैट विल डिस्कस इन द टॉपिक कॉल्ड एज थ्रेड। उस थ्रेड को हम लोग बोलते हैं डीमॉन थ्रेड। डीमॉन थ्रेड जो कि बैकग्राउंड में वर्क होता रहता है। डीमॉन थ्रेड उसका काम यही है, जैसे कि देखो एक एग्जांपल देखो। अगर तुम कोई मॉल में वगैरह गए, ठीक है, तो वहां पे हाउसकीपिंग वाले घूमते रहते, देखो कंटिन्यूअसली। ये सब नो, हाउसकीपिंग वाले कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं ना बैकग्राउंड में। ओके, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ द डीमॉन थ्रेड कि जो डेटा अनरेफरेंस है वो क्या होगा? रिमूव होगा फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है, I hope you understood the concept of garbage collection and three methods of object class. Okay, toString method, equals method, and finalize method. Because in next week we are going to learn very important concept like abstract class, interface, and one mini project. Next week we are going to learn abstract class, interface, and mini project. Okay, understood everybody? So I'll stop the session here. Please read this theory and practice the program.